Hey everyone! This lesson is in the continuation with the previous video lesson on the revision of determiners, and in that video lesson we also understood what is the difference between a determiner and an adjective. Now in this lesson determiners के 7 kinds का quick revision किया जाएगा और एक exercise के माध्यम से हम इसकी practice करेंगे और कुछ exercises आपको practice के लिए provide करवाई जाएंगी. Well, now let's begin. So it's crystal clear that determiners are words that are used before nouns to identify them or to specify them or to quantify them. As far as their types are concerned, so we have 7 kinds of determiners, which are articles, possessives, demonstratives, distributives, quantifiers, numerals, and interrogatives. Dear students, इन सभी kinds of determiners की detail previous videos में discuss की जा चुकी है. So if you haven't watched those videos yet, please watch those videos first. आइए अब हम इन 7 types of determiners का quickly revision करते हैं. First ones, articles. A, N, the. The words a and n are called indefinite articles. They are used with singular countable nouns. For example, have you a pencil? The word the is called the definite article and it is used before a noun which refers to something or someone definite. For example, you may keep the change. Articles दो प्रकार के होते हैं, definite and indefinite. Definite article is the and indefinite articles are a and n. A and n का यूज हम singular काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं और जिन नाउन्स से पहले इनका प्रयोग किया जाता है, नाउन्स और वर्ड्स को प्रोनाउंस करते समय जो फर्स्ट साउंड क्रिएट होती है, जो कि बिगिनिंग साउंड है, जो कि ओपनिंग साउंड है, उनके बेसिस पर ए और एन में से हम चयन करते हैं. अर्थात अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ए का प्रयोग करेंगे और उस नाउन की ओपनिंग साउंड अगर वावल साउंड है, माइंड इट हियर, वी आर टॉकिंग ऑफ साउंड्स नॉट लेटर्स. ए और एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जिस नाउन की ओपनिंग साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, अर्थात उस नाउन वर्ड को बोलते समय यदि कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन की ध्वनि आती है तो हम तब उस केस में आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं यदि वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो. Whereas यदि उस नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन की ओपनिंग साउंड वॉवल साउंड है यानी स्वर की ध्वनि है, उस केस में हम यहाँ आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे. यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हम लेटर्स के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं करते हैं, हम साउंड्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं. वॉवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड, द ओपनिंग साउंड ऑफ दैट नाउन वर्ड. Dear students, we will study articles in another lesson in detail. Well, let's revise the other kinds of determiners. The second kind is demonstratives. This, that, these, those. These are 4 words which are known as demonstrative determiners. These determiners indicate the noun that is being referred to. For example, this book is mine. Those books are yours. In the next kind of determiners, that is possessives, we have my, our, your, their, his, her, its. These pronouns are used to show possession or belonging. Examples: this is my family. What is your address? So the words my and your, they are used to show the possession or belonging. Next 2 types, distributives and quantifiers. Sometimes distributives are considered as quantifiers, but here we have kept them separately so that you can remember them well. Distributives each, every, several, both. These are used to refer to a group or an individual within a group. So the examples are
Each book has been kept in its proper place. We both went to congratulate them. इन एग्जाम्पल्स में आप नोटिस कीजिए each book, both, we both. These are distributives. The next are quantifiers, some, much, less, many, etc. They tell us how much of a thing is being referred to. For example, I ate some rice. I did not eat any rice. I ate much rice. Please pay your attention towards the words which we have used before the noun rice. Some, any, much. We have used these three quantifiers. Some का यूज़ affirmative verbs के साथ किया जाता है और any का यूज़ negative के साथ किया जाता है और much का प्रयोग हम uncountable nouns के साथ करते हैं जिससे तात्पर्य है a lot of यानी बहुत सारा. Now, the sixth type of determiners are numerals. They are of two types, cardinal and ordinal. Cardinal numerals are 1, 2, 3, etc. They express quantity. And in the same position, ordinal numerals first, second, third, they express sequence. For example, 15 books were stolen from the library. So here we know the number of books, and that is the cardinal numerals. And the next example, May is the 5th month of the year. In this example, we have this ordinal numeral 5th, and it tells us the sequence. Well, interrogatives are the final kinds of determiners. Which, what, whose. These three words are considered as interrogative determiners. For example, whose car is it? What books do you like the most? You know, these interrogatives are the words that determine a group or a specific thing by inquiring about them or it. In this way, we had a quick revision of all the kinds of determiners. Now let's practice. Dear students, this is the exercise number 1, and in this exercise, you are supposed to choose the appropriate determiners from the box which is given over here and fill in the blanks in the following sentences. So in the box, we have determiners like this, these, those, my, are, their, your, several, many, both, each, some, either or, neither nor. Dear students, on the basis of our study, हमने जो अभी तक determiners के बारे में study की है, उसके basis पर आपको इन boxes से determiner select करते हुए इन sentences में उन determiners को appropriately place करना है. You should pause the video here and note down all these sentences, then do this exercise. I'm reading out these sentences for your convenience. I have a book. I will write blank name on blank book. We will write blank names on blank books. So there are 4 blanks in this first example, and you are supposed to write down, you are supposed to select the determiner from the box which is the most appropriate one. For example, let us do this first one. I will write my name on this book. We will write our names on these books. In the same way, you are supposed to attempt all these sentences. The next sentences in this exercise are B. The children are walking with blank parents. C. I rang him up blank times, but there was no reply. The next sentence is D. These curtains are blank, too long, blank, too short for the windows. E. Blank reward, blank punishment has any effect on these boys. Next sentence F. Blank animals are in danger of becoming extinct. Next sentence is G. Blank her parents are doctors. And the last one on this exercise is the gardener put blank soil into blank flower pot.
So dear students, जहाँ भी हम इसमें blank read out कर रहे हैं, that means उस place पर आपको एक determiner का use करना है इस box में से select करते हुए. Now pause the video, take your time and solve this exercise. Well, here is the answer key. You can check your answers here. I hope you have done all correct. But in case, suppose you haven't done all correct, then please watch and revise these video lessons, or you can ask about your doubts in the comment section. Well, let's check the answers. इस exercise का first sentence हम already discuss कर चुके हैं. Now let's take up the second, that's B. The children are walking with their parents. इस sentence में हमने possessive determiner का use किया क्योंकि children यहाँ पर third person plural है. That's why third person plural के लिए हम जो belongingness के लिए या relation बताने के लिए जो determiner या pronoun use करते हैं, that is there, और वही हमने यहाँ use किया है. In the next sentence, I rang him up many times but there was no reply. So in the blank यहाँ हमने determiner many का use किया है और many क्योंकि यहाँ हम टाइम की बात कर रहे हैं, कितनी बार, फ्रीक्वेंसी. सो अनेक बार, मैनी मीन्स कई बार, अनेक बार. अतः यहाँ पर हमने क्वांटिफायर डिटर्मिनर मैनी का यूज किया. द नेक्स्ट सेंटेंस इज दीज कर्टन्स आर ईदर लॉन्ग और टू शॉर्ट फॉर द विंडोज. इस सेंटेंस में हमने दो ब्लैंक्स देखे. ईदर के साथ में हम यूजुअली और का भी प्रयोग करते हैं. ईदर और डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स हैं. इन द नेक्स्ट सेंटेंस, नीदर रिवॉर्ड नॉर पनिशमेंट हैज एनी इफेक्ट ऑन दीज बॉयज. इस सेंटेंस में भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नीदर नॉर का यूज किया है. ईदर और का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, जबकि इसी बात को अगर हमें नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो हम नीदर नॉर का यूज करते हैं. इस सेंटेंस में आप नोटिस कीजिए कि हमने एक और डिटर्मिनर का यूज किया है. रादर हमने दो और डिटर्मिनर्स का यूज किया है, एनी एंड दीज. एनी इज अ क्वांटिफायर डिटर्मिनर क्योंकि ये हमें एक क्वांटिटी बता रहा है और ये नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज किया जाता है. इसी सेंटेंस में हमें बॉयज नाउन को डिफाइन किया है दीज ने, एंड दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर. In the next sentence, many animals are in danger of becoming extinct. Extinct से तात्पर्य है विलुप्त होना. So many animals, we are using here the determiner many and that is also quantifying, यानी ये हमें यहाँ numbers बता रहा है, quantity बता रहा है. Many से तात्पर्य है अनेक. और ध्यान रखिए कि many का यूज हम countable nouns के साथ में करते हैं, और यदि हमें अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में यदि कहना हो अनेक या बहुत सारे, देन वी यूज मच. द नेक्स्ट सेंटेंस, बोथ हर पेरेंट्स आर डॉक्टर्स. इस सेंटेंस में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव बोथ का यूज किया है. दैट मीन्स उसके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं. इन द लास्ट सेंटेंस, द गार्डनर पुट सम सॉइल इनटू ईच फ्लावर पॉट. Determiner sum is used for quantity to tell us about the quantity. मात्रा, अमाउंट बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं. सम से यहाँ तात्पर्य है कुछ. You know, the determiner sum का यूज हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ कर सकते हैं. इस सेंटेंस में इसका यूज सॉइल के साथ किया गया है और सॉइल एक अनकाउंटेबल नाउन है. दैट मीन्स इसके कुछ निश्चित मात्रा या कुछ अमाउंट के बारे में ये रिफर कर रहा है. एंड द नेक्स्ट डिटर्मिनर ईच इज यूज्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर, जिसका तात्पर्य है प्रत्येक फ्लावर पॉट. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये एक्सरसाइज यहाँ सॉल्व की है. इसके अतिरिक्त भी कुछ और एक्सरसाइजेज हैं जो आपको यहाँ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं. यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट देम डाउन and solve these exercises if you want really a good practice of this topic, determiners. If you have still any doubt, any query, any question, you can ask in the comment section. Stay tuned for the next lesson. Thank you for joining. Happy learning.